एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रीयन्ताम् प्रवाचकः ध्रुव भट्टराई। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डः निगदति सर्वकार्य स्थित्वा संघीयता गणतन्त्र विरोधो न कर्तव्यः। राष्ट्रिय सभाः गत दिवसे उपवेशे एतद्विक्रमवर्षीयं संघीयता क्रियान्वयन ध्यानानुगमन संसदीय विशेष समिति प्रतिवेदनम् आश्रित्य विहिते विमर्शने उत्थापितानां प्रश्नानाम् उत्तर प्रदानक्रमे प्रधानमन्त्री प्रचण्डः अतर्कयत् सर्वकार्य स्थित्वा संघीयता गणतन्त्र विरुद्धे भाषणं नाम राजनीतिक रूपेण नैतिक दृष्ट्या च उभयतैव अनुचितं भवति। प्रधानमन्त्री प्रचण्डः सर्वकारात् बहिस्थिति समये स्वस्व राजनीतिक विचारं धारणां च व्यक्तुं सौविध्यं सदपि सर्वकारे सहभागिताया अनन्तरं वैधानिक प्रक्रियया स्थापिताया व्यवस्थाया दुर्बलकारी विचारस्य प्रस्तुति उचिता न भवतीति प्रत्यपादयत्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डः संविधान निर्माणस्य समयादेव संघीयताया समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाया गणतन्त्रस्य च विषयेषु ईषत् विवाद विमर्शनयो सञ्चलितो सतोऽपि संविधान सभाया वैधानिक प्रक्रियया एतेषां विषयाणां निरूपणत्वात् सर्वकार एते क्रियान्वितव्या इत्यत्र स्पष्टो स्थिति अभासत। संघीयता संविधानस्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवेदनशील क्रियान्वयनाय आवश्यकस्य विषयोस्ति चर्चयन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डः अवोचत् प्रदेश सर्वकारेषु मन्त्रिणां संख्याम् अनावश्यक व्ययं च न्यूनीकृत्य एतद्विरुद्ध उत्थितस्य प्रश्नस्य सम्बोधनाय सर्वकारेण प्रयत्न प्रारब्धो वर्तते। प्रधानमन्त्री प्रचण्डः शक्तिं स्रोत साधनानि च आवंट्य स्थानीय स्तराणाम् अधिकार सम्पन्न सम्पादनं संघीयता मूलमर्म अस्तीति विषये सर्वकार स्पष्टो वर्तते इति भाषमाणः संघीय सर्वकारीय सेवा संघीय शिक्षा संघीय प्रहरी अधिनियम प्रभृतयः संघीयताया क्रियान्वयनाय आवश्यक विधय तत्कालम् अग्रे वर्धिष्यन्ति इति अज्ञापयत्। उपवेशे संघीयता क्रियान्वयन ध्यानानुगमन संसदीय विशेष समिति संयोजकः खिमलाल देवकोटा समिते एतद्विक्रमाब्दस्य प्रतिवेदनस्य विमर्शनाय प्रस्तावं प्रास्तौत्। विमर्शनस्य क्रमे सांसदः सर्वकारस्य मन्त्रिभिरेव संघीयताय विरोधो विहित इति ब्रुवन्तः तत्र विरोधम् अज्ञापयन्। सांसदै प्रदेश सर्वकारस्य भूमिकाया मन्त्रालयानां संख्यायाश्च पुनरवलोकनम् आवश्यकमस्ति इति धारणा व्यक्ता। तत्पूर्वम् उपवेशस्य शून्य समय सांसदः सर्वकारीय चिकित्सालये प्रदीयमानं सेवां सुलभां गुणस्तरीयां च विधातुम् आपणेषु नागरिकाणां स्वास्थ्ये गभीर प्रभावित भावकानां गुणस्तरहीनानां औषधानां उत्पादन विक्रय वितरणानां वस्तुस्थितिं प्रति सर्वकारस्य ध्यानम् आकृष्य तन्नियन्तुं च अभ्यचन्त। राष्ट्रिय सभा अपरोपवेश परसो माघस्य त्रयोदशे दिवसे शुक्रवासरे अपराह्नस्य 4 बस्ता। शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्री शिशिर खनाल कथयति उच्च शिक्षा कृते विपुल संख्यां विदेशं गन्तुकामन् विद्यार्थिनो रोद्धुं नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकम् अग्रे वर्धापितमस्ति। राष्ट्रिय सभायाम् एतद्विक्रमवर्षीयं नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकम् आधृत्य ह्यो विहिते विमर्शने सदस्ये उत्थापितां जिज्ञासां समाधानो मन्त्री खनाल अगदत् न केवलं गुणस्तरीय शिक्षा अपितु संघीयताया मर्म भावना च विश्वविद्यालय विधेयकेन आत्मसात् कृते स्तः। तत्पूर्वं विधेयकम् आधृत्य विहिते विमर्शने सदस्यैः विश्वविद्यालयम् उत्कृष्ट प्राज्ञिक क्षेत्रस्य रूपेण व्यवस्थातुम् आवश्यकता प्रदर्शिता आसीत्। सभाया अध्यक्षेण गणेश प्रसाद तिमलसेनाभिधेन विधेयकमेतद् विचार्यतामिति निगद्य प्रस्तुतः प्रस्ताव सदनस्य बहुमतेन स्वीकृतोऽस्ति। प्रतिनिधि सभा ह्यस्तनोपवेशेन प्रतिनिधि सभा नियावल्याः प्रारूप समिति संघटिता वर्तते। उपवेशे नेकपा माओवादी केन्द्रस्य सांसदेन देवेन्द्र पौडेलेन प्रतिनिधि सभा नियावली प्रारूप समिति संघटनीया इति निगद्य समिति सदस्यानां नामावल्या सहित प्रस्तुतः प्रस्ताव उपवेशन सर्वसम्मत्या पारितकृतो वर्तते। समिते प्रतिनिधि सभा नियावल्या प्रारूपं निर्मातुं 15 दिनानां समयावधि निर्धारितो वर्तते। उपवेशे सभामुख देवराज घिमिरे सभामुखस्य अनुपस्थितौ उपवेशस्य अध्यक्षतायाः विधातॄणां सदस्यानां नाम्नां परिवर्तनस्य विषये ज्ञापितवान् आसीत्। तत्पूर्वं ह्यस्तनोपवेशे नेपाली कांग्रेस दलस्य वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलः राष्ट्रिय व्याप्ताः समस्या समाधाय अग्रे वर्धितुं दलानां मध्ये सहमते सहकार्यस्य राष्ट्रियताश्च आवश्यकतां प्रादर्शयत्। उपवेशे राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलस्य अध्यक्ष उपप्रधान गृहमन्त्री च रवि लामिछाने राज्यस्य संयन्त्राणि अव्यवस्थितानि कृतानि सन्तीति हेतोः अपेक्षितानि कार्याणि कर्तुं समय अपेक्षितो स्थिति स्पष्टीकृतवान्। उपवेशे नेकपा एमाले दलस्य नेता रघुवीर महासेठ नेकपा माओवादी केन्द्रस्य नेता देवेन्द्र पौडेलश्च देशस्य सामूहिक विषयेषु विचारं व्यक्तवन्तौ।
संचार सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा गदती प्रेस काउन्सिल नेपालेन प्रदीयमाने आचार संहिताया प्रशिक्षणं अभिमुखीकरणं च अतिरिक्तं व्यापकै प्रभावकारी च विधातव्ये यह प्रेस काउन्सिल नेपालस्य निरीक्षणस्य क्रमे मन्त्री शर्मा संचार मन्त्रालयेन जनसञ्चारेण सह सम्बद्धै विषय सम्बद्धो भूत्वा कार्यं विधीयते इत्यवोचत् जनसञ्चार क्षेत्रम् आचार संहिताया पालनाया सह अतिरिक्तं दायित्ववाही सम्पादयितुं प्रेस काउन्सिल नेपालेन सक्रियेण प्रवर्तनीयमिति मन्त्री शर्मा बलं प्रादात् असौ संचारस्य विषयान् व्यवस्थितान् विधातुं प्रेस काउन्सिल नेपालाधिनियमस्य सामूहिक सम्पादनादिषु विषयेषु सम्बद्ध निकायेन सह समन्वयो विधास्यते इत्यवोचत् स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्री पदम गिरी स्वास्थ्य क्षेत्रं मर्यादितं जनतामुखी च सम्पादयितुम् आवश्यकतां दर्शयति शुक्रराज ट्रपिकल संक्रामक रोग चिकित्सालयस्य 89तम वार्षिकोत्सवस्य अवसरे ह्यः काष्ठमण्डपे आयोजिते कार्यक्रमे मन्त्री गिरी अभासत सर्वेषु नागरिकेषु गुणस्तरीयां स्वास्थ्य सेवां प्रापयितुं सर्वैर्मिलित्वा कार्यं विधातव्यम् मन्त्री गिरी चिकित्सालय न्यूनतोऽपि 500 शय्यायुतो विधेय इत्यत्र बलं प्रादात् कार्यक्रमे स्वास्थ्य जनसंख्या राज्यमन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्की चिकित्सालयस्य सेवां विकेन्द्रितां विधाय अन्येभ्यः स्थानेभ्यः अपि संक्रामक रोगस्य रुग्णानां उपचारो विधेय इति परामृशत् शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्री शिशिरा खनाल गदती नेपाली युवाना स्वदेशेव नवीन प्रविधि नव प्रवर्तनाभ्यां सम्बद्धेषु कार्येषु संयोजनीयः नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानेन ह्यः ललितपुरे आयोजिते राष्ट्रिय नव प्रवर्तन सम्मेलने मन्त्री खनाल अवोचत् यूनां विदेशे पलायनस्य क्रमं रोद्धुं योग्यानां क्षमाणां च यूनां नेपाले एव स्थित्वा नवीन प्रविधि नव प्रवर्तनाभ्यां सह सम्बद्धेषु कार्येषु संलग्नताया वातावरणं स्रष्टव्यम् मन्त्री खनाल वर्तमान युगं प्रविधो एव आदृतम् अस्ति इत्यतः देशस्य वास्तविकतां ज्ञात्वा तदनुकूलमेव कार्यं विधातव्यमिति न्यश्चिनोत् यो दिवा बाजुरा जनपदस्य मेलास्थानस्य पार्श्वभागं केन्द्रबिन्दुं निर्माय दुरापण्डेन भूकम्पेन एको जनः अम्रियत दशमलव नवाधिक 5 रेक्टर स्केल मापनस्य भूकम्पेन बाजुरा जनपदस्य गोमूल ग्रामपालिकाया द्वितीय वडा क्षेत्रवर्तिनो जुरेली स्थानस्य 35 वर्ष कल्पा जमुना रोका मृत्यति प्रहरी ज्ञापयति भूकम्पस्य कारणेन गोमूल ग्रामपालिका एव प्रथम वडा क्षेत्रवर्तिनी अम्लिस स्थिते डोडरी विपिने दुरापण्डेन भूस्खलनेन रामदल बोहरा भिदस्य 44 अधिका मेषा पूर्णात् मृता इति स्थानीय दीपेन्द्र रोकाय असूचयत् भूकम्पस्य कारणेन बाजुरा जनपदे 24 अधिकेषु गृहेषु क्षतिश्च प्राप्तेति प्रहरी ज्ञापयति नेपाली कांग्रेस दलस्य केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल कथयति संचार स्वतन्त्रताया संकोचनकारी कार्यं स्वीकार्यं न भवति रेडियो नेपाल कर्मचारी संघस्य सिंहप्रासाद शाखा 10माधिवेशनं ह्यः उद्घाटन नेता पौडेलः सर्वकारीय संचार माध्यमे जनताया करेण सञ्चालनस्य कारणेन कस्यापि दलस्य समूहस्य च मुखपत्रे न भाव्यमिति धारणम् उपास्थापयत् रेडियो नेपालस्य कार्यकारी निर्देशक बुद्धिबहादुर केसी पञ्चदश्या योजना लक्ष्यानुरूपं राष्ट्रस्य सर्वेषु भूभागेषु रेडियो प्रसारण विस्तारितुं रेडियो नेपाल प्रतिबद्धताया सक्रिय स्थिति अवोचत् कार्यकारी निर्देशक केसी कर्मचारिणां हिताधिकार कृते आत्मना सदैव अनुकूलेन स्थितमिति ब्रुवन् अनुबन्ध सेवायां कार्यरता कर्मचारिणः शीघ्रं सामाजिक सुरक्षा कोषे आबद्धा विधास्यन्ति इति अज्ञापयत् रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति रेडियो नेपालस्य संचालक समिति सदस्य सीताराम पोखरेल अगदत रेडियो नेपालस्य प्रसारणे व्यवस्थापन पक्ष च सुधारो विधेयः कार्यक्रमे वरिष्ठ संचारकर्मी पुरुषोत्तम दाहालः नायब कार्यकारी निर्देशक खगेन्द्र खत्री रेडियो नेपाल कर्मचारी संघस्य अध्यक्ष चेतनारायण पौडेलः रेडियो नेपाल पत्रकार महासंघस्य अध्यक्ष विप्रमणि आचार्यः पब्लिक मीडिया फोरम मञ्चस्य अध्यक्ष दुर्गा फयालः रेडियो नेपाल कर्मचारी युनियन संघस्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेश घिमिरे च विचारं व्यक्तवन्तः इति समाचारः।